अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ये आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली वो गैस चैनल सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट स्लाइडर गो थ्रू करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन गाइस। आज का जो हमारा स्लाइडर है वो बहुत ही इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव है। आई होप इससे पहले आपने शायद स्लाइडर को इफेक्ट को नहीं गो थ्रू किया हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हमने जो है वो यहाँ पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपस में इंटरलिंक कर लिया है। और अब हम यहाँ पर सिंपल कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे। लाइक वी आर गोइंग टू क्रिएट द कैरोसेल। बहुत इंटरेस्टिंग कैरोसेल है गाइस। स्टे कनेक्ट विद मी विद द एंड, क्योंकि आपको रिजल्ट इसका बहुत पसंद आएगा। सो इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। एंड अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर the carousel box. After that we are going to create further more classes. So यहाँ पर मैं कोई क्लास ले लेती हूँ टाइटल की। टाइटल में जो भी पिक्चर लेंगे गाइज आप उसके हवाले से उसको एडिट कर लेंगे हम यहाँ पर। लाइक अगर हमने कोई भी न्यूयॉर्क सिटी ली है तो हम यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी से उसको लेबल कर लेंगे। सो वॉट एवर जब हम पिक्चर्स गेट करेंगे उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को एडिट एंड अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है जी। इसी के साथ इस डिफ से बाहर आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर एक नंबर की क्लास ले लेंगे और यहाँ पर नंबर 1 आपका मेंशन हुआ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सिंपल आपने एक इमेज टैग ओपन करना है जो कि हम इन दी एंड गेट कर लेंगे और इसी के साथ एक ऑल्टरनेट टैग्स आप मार्क कर देंगे लाइक इन दिस वे। ठीक है जी। और अब आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों डिफ से आपने बाहर आ जाना और फिर आप टेक अ मल्टीपल कॉपी कैरोसेल आइटम के उसके इसके हवाले से फिर आप जितनी भी पिक्चर्स लेते जाएंगे आप उन चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ एंड देन जितने मुझे पिक्चर्स कैरोसेल्स लेनी है 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो मैंने यहाँ पर गाइस कुल 10 इमेजेस गेट करनी है और इसको लेबल हम साथ साथ करेंगे और पिक्चर भी साथ साथ ऐड करते रहेंगे। सबसे पहले हम CSS पर आते हैं और CSS की क्लासेस को यहाँ पर हम गो थ्रू करेंगे। उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट और इन दी एंड में हम पिक्चर्स लेके आपको उसका प्रीव्यू गो थ्रू कराएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ इन दी एंड में कर्सल्स के बाद कर्सल की सेटिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। सबसे आखिर में मैं आ जाऊँगी और सारे डिफ से बाहर आ जाने के बाद यहाँ पर मैं एक कर्सल का क्लास क्रिएट कर देती हूँ। ओके, इसको मैं यहीं क्लोज़ कर दूँगी। इसी के नीचे मैं अनदर क्लास क्रिएट करती हूँ कर्सर की और इसी के साथ में कर्सर 2 की क्लास भी कॉल कर लेती हूँ, कर्सर 2। ठीक है जी। ओके फाइन, बस इतना ही करना था। अब हम सिंपल CSS की तरफ आ जाएंगे एंड देन सबसे पहले बॉडी पर आते हैं और यहाँ पर ओवरफ्लो को हम हिडन रखेंगे। इसी के साथ साथ फॉन्ट फैमिली जो भी आपको सेट लगती है फ़िलहाल हम sans serif गेट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर गेट कर लेती हूँ ब्लैक। ओके फाइन, मूव ऑन। दी नेक्स्ट क्लास इज़ अ carousel। ओके, कैरोसेल के अंदर सबसे पहले पोजीशन को हम रिलेटिव रख लेंगे एंड आफ्टर दैट Z इंडेक्स को हम 1 कर देते हैं। इसी के साथ साथ हाइट में 100 VH रखूँगी एंड देन ओवरफ्लो अगेन हिडन कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। सो पॉइंटर इवेंट्स को हम नन कर देंगे। ठीक है गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट। इसी के साथ साथ कैरोसेल आइटम so move on the next class is a carousel item। so मैं carousel item को कॉल कर लेती हूँ यहाँ पर और सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर कुछ आइटम्स क्रिएट करेंगे।
अगैन जब भी हम विथ कॉल करेंगे यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ ताकि हम एक फंक्शन जो है वो इसके अंदर स्टोर कर दें और जब भी हमें कॉल करना हो हम इजीली इसको कॉल कर लें। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। हाइट, clamp, so provide here the value 200 px. After that 40 view width and then 400 pixels. Move on the next. Again x-axis. तो ये वैल्यू स्टोर करने का बेनिफिट ये होता है गाइस, जब भी आपको कॉल करना होगा सिंपल आप इन्हीं वैल्यूज़ को कॉल करवा देंगे और आसानी से ये एडिट हो जाती हैं। कैलकुलेट वेरिएबल, सो एक्टिव, multiply by 800% and then close. Move on the next. The y-axis, calculate, again you can write it here the variable and then active. So I think active को we are call in a bracket. Okay, क्योंकि it's already another function, that's why 200%. So move on, the next function is a root. Calculate variable, then active, multiply 120 degree, just giving here some space between all the values ताकि एक वो प्रॉपर वे में रनिंग के अंदर आ जाए। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। Okay, move on. The next function is the opacity. Calculate variable, so z index, variable, take it here some items. थोड़ी सी क्रिटिकल है इसकी क्योंकि आप जब इसका रिजल्ट देखेंगे इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन इट्स वेरी कंपल्सरी। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। सो ओवरफ्लो हिडन, इसी के साथ साथ गाइस पोजीशन को हम एब्सोल्यूट रख लेते हैं। जेड इंडेक्स, अब देखें जेड इंडेक्स की वेरिएबल आपने प्रोवाइड कर दी है। सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसी के अंदर जेड इंडेक्स कॉल कर लेना। तो ये बेनिफिट है, अब जो ऊपर आपने मेथड दे दिया अब उसी के हिसाब से ये रन कम्प्लीटली हो जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ साथ विथ पर आ जाता है। जो विथ आपने ऊपर डिसाइड की होगी
अब उसी विथ को यहाँ पर कॉल करा लेंगे। ये देखें इजी हो गया मेथड। And then you can implement here the height, again variable and height. So margin, calculate function में जो आपने margins दिए थे variable के अंदर, आप वही same method height का call कर दोगे and then multiply by minus 0.5. okay, values, calculate again, then you can write it here the variable, so again आपने यहाँ पर विद प्रोवाइड कर देनी, तो ऑटो डिडक्ट हो जाएगी वो वैल्यूज़ जो आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हैं। विद के बाद मल्टीप्लाई माइनस 0.5। ठीक है, ये इसके ज़रिए इसका मार्जिन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सो इम्प्लीमेंट हियर द बॉर्डर रेडियस 10 px, आफ्टर दैट टॉप 50, इसी के साथ साथ लेफ्ट एज वेल एज 50। After that we are going to the WebKit, user select, इसको none कर देंगे हम। After that we are going to implement mouse, again user select, इसको भी आप none कर देंगे डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर। इसी के साथ साथ ms यूज़र सेलेक्ट, इसको भी आपने नन कर देना है। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ यूज़र सेलेक्ट को भी नन कर देंगे। आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, सो नाउ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, 0% एंड 100% इसको हम होल्ड करा लेंगे। आफ्टर दैट द इम्प्लीमेंट हियर द बॉक्स एरो, जितना भी आप इंक्रीज़ करना चाहो अपने हिसाब से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर सम वैल्यूज़। इसके अलावा आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको सही लगता है यू कैन इम्प्लीमेंट हियर, प्रोवाइड हियर द RGB कलर्स, ऑल वैल्यूज़ गेट इन अ 0। For the opacity light 0.5 here, इसी के साथ साथ बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट पॉइंटर इवेंट्स ऑल एंड देन ट्रांसफॉर्म, सो ट्रांसलेट। सो सिंपल हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे, x axis comma variable y, क्योंकि हमने ऊपर प्रोवाइड कर दिया दोनों चीज़ें तो हमें इस चीज़ की इशू नहीं है। एंड देन इम्प्लीमेंट हियर अगेन रोटेट में हमने भी ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया था, डू यू रिमेंबर, वेरिएबल्स के अंदर। सो रूट, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर 2 ब्रैकेट बाय मिस्टेक हमने ऐड कर दिए थे, तो हमने उसको जो है वो रिमूव कर दिया। मूव ऑन दी ट्रांजिशन, ओके, सो इम्प्लीमेंट हियर द ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 0.8 second, cubic bezier
we are going to add some values here. 0, 0.02, comma 0, then comma 1. ठीक है guys. So move on. The next is the carousels item. Okay. मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कीजिएगा. अगर आपकी कोई सी भी मिस्टेक हो जाती है तो ऑब्वियसली वो रिज़ल्ट आपको एलिमेंट जनरेट नहीं होगा. सो मूव इन दी हेयर द कैरोसेल बॉक्स. इंटरनेट से इसकी काम नहीं कर रही है. शायद देख लेंगे क्या इशू है. Z index 1, so top 0, after that left as well as 0, width is 100%, and after that height as well 100%. इसी के साथ साथ ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट हियर द ओपेसिटी. सॉरी, मैं इसकी वेरिएबल इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी. ओपेसिटी 0.8 सेकेंड गेट कर लेते हैं. एंड देन क्यूबिक बेजियर अगैन. प्रोवाइड हियर सम वैल्यूज. 0.02, 0, then here is 1. ठीक है जी. मूव ऑन द नेक्स्ट. प्रोवाइड हियर द ओपेसिटी. सो वेरिएबल डिक्लेयर किया था ओपेसिटी का, यहाँ पर कॉल कर देंगे. फॉन्ट फैमिली sans serif रख रहे हैं. इफ़ यू वांट टू चेंज, आप यहाँ से टाइम न्यू रॉबिन भी रख सकते हैं. तो डिपेंड ऑन यू. मूव ऑन द नेक्स्ट. So again here the carousel item, and then again the carousel box. So यहाँ पर मैं सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर रही हूँ गाइस बिफोर. सबसे पहले कंटेंट पर आ जाते हैं. ओके. इसी के साथ साथ पोजीशन इज एब्सोल्यूट. Z index is 1, so top again 0, left 0. सो विथ गाइज और हाइट दोनों को अब 100% कैलकुलेट करेंगे बॉक्स की. ओके. एंड देन प्रोवाइड हियर द बैकग्राउंड. ओके. लीनियर ग्रेडियंट. सो पोजीशन रख रही हूँ 2 बॉटम्स है. कॉमा RGBA कलर. सॉरी. सो RGBA कलर में आपके पास वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट करनी है आपने. लास्ट में 0.3. इसी के साथ साथ कॉमा अगैन. प्रोवाइड हियर अगैन RGBA कलर. प्रोवाइड हियर सब वैल्यूज़, क्योंकि मुझे ओपेसिटी के अंदर लेना है इसलिए मैं यहाँ पर ज़ीरोज़ के अंदर वैल्यूज़ गेट कर रही हूँ. Move on the next again. 30%. Again RGBA. So all the values become again 0. Provide here some space for the RGBA method. Okay. So again here is the 50% opacity level. Provide here again RGBA.
सो लास्ट वैल्यू इज़ 0.1. ठीक है गाइस, सो यहाँ पर हमने कलर इम्प्लीमेंट कर दिए. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द carousels item and then title. हमारा CSS इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, बट इट्स ओके. मैंने उसको इंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके देखते हैं. एंड दैन फिर विंडो को दोबारा से रन करवा देंगे तो वो गेट कर लेगा. अदरवाइज़ आप लोग के पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा. मैंने पहले भी बताया है, द एक्सटेंशन इज़ वेरी क्वाइट यूज़फुल. 20px bottom, so left as well as 20px. After that, transition, provide here the opacity 0.8 seconds, cubic bezier, so again 0.02. लिस्ट में हमारी गिवन वैल्यू आ नहीं रही क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा इसको दे दी है. फिर भी खैर इट्स ओके. मैंने कहा ना ये ऑटो इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रहा है इसका. सो चेक कर लेंगे. फॉन्ट साइज 20px, viewpoint, and then 30px. Implement here the text shadow. For px, and again you can implement here for px and RGB color. और RGB के अंदर we are going to implement this one. ठीक है जी. Move on the next. So carousels आइटम के अंदर हमने एक नंबर की क्लास बनाई थी. ओके, जिसपे हमने टेक्स्ट राइट डाउन करने हैं. ये वो क्लास है. ठीक है गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द विड्थ इट्स 100%. आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट हियर द हाइट एज वेल 100%. सो object fit, it's a cover. After that we are going to implement again object fit, again over here the cover and the pointer events, it's none. Okay, move on the next. Oh sorry, it's an image. I forget to re-edit this. Okay, यहाँ पर we're going to implement again. So the carousels item, अभी यहाँ पर मैं num की क्लास ले लूँगी. and then position is absolute. z index हम 1 रख लेते हैं. कलर हम वाइट रख देते हैं. टॉप वी आर गोइंग टू टेक हेयर द 10px. आफ्टर दैट लेफ्ट इज 20px. and then transition, here is the opacity 0.8 seconds. again cubic bezier, same values अभी तक देते आए हम. 4 values for the positioning. Okay, font size, clamp, going to implement 20px, 10 view height, and then again 80px. okay fine. so यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है. मूव ऑन दी
जावास्क्रिप्ट एंड देन पिक्चर लेते हैं और कुछ एडिशन करनी हुई CSS में, तो फिर हम इन द एंड में उसको गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है गाइस, ओके। कर्सल के ऊपर भी आई थिंक कर्सल की क्लास को भी यहीं पर ही हम अभी एडिट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर्सल इम्प्लीमेंट किया था इन द एंड। डू यू रिमेंबर? ओ कर्सर सबसे पहले पोजीशन को इसकी फिक्स कर देंगे, Z इंडेक्स 10, top 0, again left 0, साइज की यहाँ पर मैं एक वेरिएबल जनरेट कर लेती हूँ 40px। आफ्टर दैट विद variable size and again height variable size. So implement here the border radius is 50%. So border is 1px, solid and RGBA color. ओके मैं जो हूँ वो लाजमी टू जो है ना, वो मेरा माउस सॉरी कीबोर्ड का टू जो है वो वर्क प्रॉपर वे में शायद नहीं कर रहा, लेकिन टू लिखना है। ठीक है गाइस, ओके। मूव ऑन द मार्जिन, calculate. So here is a variable, then size multiply minus 0.5 जो वैल्यू हमने ऊपर दी थी, calculate. So variable size multiply minus 0.5, ये वैल्यू ज़रा आपने ध्यान से देनी है। मूव ऑन द नेक्स्ट, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 0.85 seconds. Again the cubic bezier, same value. Don't forget to write here the comma. Move on the display को हम none कर देते हैं, and then pointer events obviously none. Okay, implement here the media query. So यहाँ पर मैं pointer events को कॉल कराऊंगी। So I just write it here the pointer. Fine, okay. So come back here the cursor. So यहाँ पर हम cursor की क्लास को कॉल कर लेंगे। So display is block. Okay, so move on the next class. It's a cursor too. Okay, सिंपल यहाँ पर साइज देना है आपने। Size is 2px. And after that implement here the transition. Duration is 0.7 seconds.
सो मूव ऑन दी जावास्क्रिप्ट कोड और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे हम। तो सबसे पहले लेट एक वेरिएबल प्रोग्रेस का डिक्लेयर कर देते हैं। ओके इसी के साथ लेट स्टार्ट ऑन एक्स एक्सेस, then initial value is 0. again एक और let active, and then let is down equals to false। ठीक है जी। इसी के साथ कांस्टेंट क्रिएट करेंगे कुछ। तो यहाँ पर स्पीड विल इक्वल्स टू 0.02। आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। एंड देन कांस्टेंट स्पीड ड्रैग सो -0.1 वैल्यू यहाँ पर गेट कर लेंगे। ओके अब यहाँ पर हमें जेड एक्सिस को गेट करना है, जेड इंडेक्स को। तो कांस्टेंट गेट जेड इंडेक्स इक्वल्स टू array comma index greater than equals to array dot map। so open here two values, okay so initial I, so greater than equals to, here is the index equal 1, not 1 equal to I for I, so क्वेश्चन मार्क इसको एंटर कर देते हैं ताकि हम इजीली पूरे डेटा को इन फ्रंट ऑफ यू हम क्लियरली गेट कर सकें। सो array डॉट लेंथ इक्वल्स टू array डॉट लेंथ माइनस math dot so index minus I। ठीक है गाइस, तो here is our 3 bracket, you can easily close। इसको हम दोनों को भी ऊपर ले लेते हैं। ओके फाइन, अब हम आइटम्स क्रिएट करेंगे। सो अगेन कंस्ट्रक्ट करेंगे डॉलर आइटम्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी selector all, so single quoted dot carousel item। so move on the next, construct cursor equals to
document implement here the query selector all dot cursor. Okay, again construct display item equals to item index active so here is the function construct z index equals to get that index small bracket, and you can implement here the large bracket for the array. So first one is $item comma active, then again you can implement here the index. After that we are going to write it here the items dot style dot set property implement here the function that index. So now implement here again, you can implement the z index value and then move on the next. Again you can write it here the item dot style dot set property. So same procedures, you can write it here quoted z bulky we are going to take it here the active comma, so again open index minus active and then divided by items by items dot length. Okay, move on the now close it here. अब यहाँ पर गए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वी आर गोइंग टू एनिमेट दिस फंक्शन. तो यहाँ पर एनिमेट करने के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे अब हम. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट एनिमेट we're going to write it in a small so here is the procedure progress equals to math dot maximum 0 math dot minimum progress 100. So again you can write it here the active equals to math dot floor value, again you can write it here the progress
divided by 100 and multiply by, so जो items थे हमारे dot length -1. So dollar item dot for each so item dot index greater than equals to display items, so item index active. So now we are going to call here the function. तो यहाँ पर मैं जस्ट एनिमेट से ये फंक्शन कॉल कर लूँगी जो ऊपर हमने बना दिया, ठीक है। सो अब क्लिक ऑन आइटम्स पर आते हैं। सो आइटम्स डॉट लूप में चलाएंगे फॉर ईच आइटम्स, बल्कि मैं यहाँ पर आइटम ले लेती हूँ index so here is the procedure item dot add event listener. When you click on each and every slider is switch quoted equals to greater than, write it here. Another procedure for the progress equals to initial value divided by items dot length multiply by 100 and then plus 10. So again you can call it here the animate. Okay, now you can close it here. अब गाइज हैंडलर्स पर आते हैं, जो हमारे दो हैंडलर्स हमने बनाए, कंस्ट्रक्ट हैंडल wheel still. Okay, move on the next. So construct wheel progress का यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। wheel progress equals to delta y multiply speed well. Okay, इसी के साथ साथ move on the next. Progress equals to progress ऐड कर देंगे wheel program से. Okay जी, and then again you can call it here the animate function. Okay, now again you can out from this construct another construct so its name is handle mouse move. Equals to
rather than equals to. Here is the construct if e dot type equal when you take the mouse move. So कौन सा मेथड इस पर रन होगा वो यहाँ पर हम लिख देते हैं. So cursor dot for each. So for each, and then here is another call, the cursor. कर्सर में से हमें ऐसा हटाना होगा. इस यहाँ पर हम कर्सर कॉल करेंगे. डू यू रिमेंबर हमने 2 बनाई थे क्लासेस. So here is another one. Okay, now here is the construct. So the cursor dot style dot transform. So transform equals to translate So here is the client X. Pixels. You can write it here the dollar. E dot client on Y. So I just change here the bracket. Client dot Y. Then pixels. Okay. So again construct not is down, return. So again construct x equals to e dot client e dot client on the x axis equal e dot touches, and sorry I close the caps lock, e dot touches, and I add e dot touches index value is 0, then client x equal 0. So construct mouse progress. We are going to create here another equals to x. We are going to write in the bracket x start x so multiply and then speed drag. Speed drag.
So move on the next line. Here is the progress equals to progress add up mouse progress. So move on the start x equals to x, and then you can call it here again the animate. So call here the function of animate. Move on the next. Construct handle mouse, यहाँ पर हमें डाउन लिखना होगा. So is down equals to true, and then again start x equals to e dot client x equal e dot touches so client x equal, then write it here 0 and then close it here. So move on another. Construct हैंडल माउस अप. तो ये सारे फंक्शन आपने क्रिएट करने होंगे वन बाय वन, ताकि ये सारे इवेंट जो है वो रन करें. जैसे आप माउस को अप करें या डाउन करें तो ऑल इवेंट आर गॉन रन. So is down equals to false. So लास्ट में गाइस लिसनर्स के अंदर ये चारों पांचों फंक्शन जो आपने ऐड किए हैं वो हम ऐड कर देते हैं. सो इससे बाहर आ जाएंगे एंड देन जो भी लिसनर्स हैं हम उसको उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे वन बाय वन. ठीक है जी. सो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर mouse wheel, first one handle wheel. ठीक है जी. Move on the next. Again document dot add listener event, then mouse down. So ये सारे कंस्ट्रक्ट हैं जो कि मेथड्स हम क्रिएट कर रहे हैं. हैंडल माउस डाउन. तो वन बाय वन इससे ज़्यादा भी आप चाहें तो बना सकते हैं. फिलहाल हम यहाँ पर 3 ले लेंगे. आप बाद में आप ऐड करना चाहें तो इसको और ऐड कर सकते हैं. जितने भी माउस इवेंट्स आप जो है वो बनाना चाहें. माउस मूव कॉमा एंड दैट हैंडल माउस मूव. ठीक है गाइस. सो 2-3 इवेंट और रह गए, वो भी हम हाथों हाथ ऐड करते रहते हैं. इसको कॉपी कर लेते हैं. सो कॉपी करके 4 इवेंट और ऐड कर देते हैं. ओके बस सिंपल माउस डाउन को चेंज करते जाएंगे माउस अप पे, और यहाँ पर अगेन हैंडल माउस अप ले लेंगे. ठीक है जी. अगेन मूव ऑन दी नेक्स्ट. इसी के साथ टच स्टार्ट, टच स्टार्ट में तो यहाँ पर माउस डाउन ले लेते हैं. ओके अगेन
टच मूव पर सो यहाँ पर अगेन ओके माउस मूव हो गया है। लास्ट ऑन द लीस्ट टच हैंड पर, टच एंड पर हम अब माउस ओके। सो यहाँ तक गाइस हमारा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया है। पिक्चर्स लेते हैं वन बाय वन, दैन वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट। सो गाइस रैंडमली यहाँ से हम जो है वो सम पिक्चर्स गेट कर लेते हैं। सो जस्ट पिक्चर्स गेट करते हैं, दैन इम्प्लीमेंट हेयर। ओके लेफ्ट क्लिक, कॉपी इमेज लिंक एंड दैन VS पे आके सबसे पहली पिक्चर ऐड ऑन करते हैं। बस गाइस मैं एक दो पिक्चर्स ऐड करके दिखा देती हूँ आपको। अब यू कैन ऐड इट मल्टीपल हेयर। सो जो भी सिटी वगैरह जो भी एच डी पिक्चर्स हैं फ़िलहाल हम रैंडमली गेट कर रहे हैं। आप कोई सी भी ले सकते हैं। सो कॉपी इमेज एड्रेस ओके। फ़िलहाल मैंने जो है वो 4 पिक्चर्स ले लिए हैं। इफ़ यू वांट टू रिपीट हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि वी आर गोइंग टू सेव आवर वर्क और फाइनलाइज करें इसको ताकि आपको फाइनल व्यू हम अभी के अभी ही चेक करा दें। ओके सो मैं इन्हीं को ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके फाइन, फ़िलहाल हम इसको रन कराते हैं, दैन वी आर गोइंग टू शेयर द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट गाइस और आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये देखें बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं कैरोसेल्स का है। और जितना भी चाहें, आपने बाकी पिक्चर्स अभी ऐड नहीं की हैं तो आप वन बाय वन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से यू वांट टू एडिट टैग्स इमेजेस, इस तरीके से बहुत अमेजिंग स्लाइडर आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।